हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लैंड क्रूजर LC 300। इसका प्राइस 2.10 करोड़ रुपीज़ है और इस वीडियो में हम इस कार का एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इट्स इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू V3 कार्स बिकॉज हम आपको दे रहे हैं ऑटो एक्सपो की इंटेंसिव कवरेज। चलिए इस कार का एक्सटीरियर देखते हैं। So talking about the frontal design of the LC 300, the first thing that I have noticed is कि ये बहुत upright है. So when you see the car, of course car किसी platform पे है, so you know this is not the right way to assess its proportions. But still अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा हो जाऊँ, then this feels massive because you know it's already there. You know मेरी waist high तक है. अगर हम frontal design की बात करें in general, then you get this large Toyota logo over here. Of course this entire thing looks like one big brick और उसमें ये लोगो बहुत बड़ा लगता है and the grill is also really big. You know it is wide this way as well as this way. यहाँ पे आप देखेंगे इसमें there are different trims over here, so glossy silver finish है, then there's chrome and you know यहाँ पे black finish है and even these panels, these look really huge. Headlamps की बात करें तो these look stretched and I really like these sort of headlamps that Toyota has adopted LC 300 के डिज़ाइन के लिए. ये भी LED टाइप हेडलैम्प्स हैं. सो द बीम ऑन द इनसाइड इज़ हाई बीम और साइड पे इसके लो बीम है. देर आर LED DRLs over here. These also work as turn indicators जो dual basically function indicators हैं. Then you also get the fog lamps over here. These are also LED type. Look at the thick chrome detailing over here all around the bumper. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि कहीं पे भी आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग नहीं है. सो दिस कार इज़ मेंट पर्टिकुलरली फॉर ऑफ रोड यूज़ एंड बेसिकली टू बी अब्यूज्ड. लेकिन कहीं पे भी आपको ब्लैक क्लैडिंग नहीं मिलेगी. एवरीवेयर इट इज़ बॉडी कलर्ड. अब हम इसके फ्रंटल डिज़ाइन में कुछ नोटेबल फीचर्स की बात करें तो यू कैन सी द फ्रंट पार्किंग कैमरा ओवर हेयर. यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स हैं. देयर आर 4 सेंसर्स ओवर हेयर एंड वी ऑफ कोर्स टॉक्ड अबाउट हेडलैम्प्स. बट you know this car doesn't get ADAS technology as such, so the car is priced at 2 crores, over 2 crores ex-showroom, but there are no ADAS related features over here. Now as we move to the side, so of course we have to talk about the alloy wheels. Now these are 20-inch wheels over here and these are done in chrome, so these are not dual finish type alloy wheels, fully done in chrome. You know we don't get to see such chrome on alloy wheels these days, but yeah, Toyota is offering it with the LC 300 and they don't look bad to me as such because ये complement कर रहे हैं इसके बाकी जगह के chrome को. If you will see the ORVMs, they are also done in chrome. So this is all chrome. There's no body color over here on the ORVMs. नीचे plastic cladding है, ऊपर there's chrome. You do get 360 camera support for the parking camera and if you will see over here तो यहाँ पे puddle lamp भी है. और डेफिनेटली गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए दिस कार यू नो द ग्राउंड क्लियरेंस इज सच दैट यू विल रिक्वायर साइड स्टेप टू गेट इनटू द कार. तो वो यहाँ पे ऑफर कर रहा है टोयोटा. और इसके जो डोर हैंडल्स हैं दीज आर ऑल्सो डन इन क्रोम. सो पूरा डोर हैंडल क्रोम में नहीं है बट अ पार्ट ऑफ इट इज़ डन इन क्रोम. सो दिस कार लुक्स ह्यूज फ्रॉम द साइड. इवन इफ आई स्टैंड हेयर यू नो इट्स टॉलर देन मी. You can see there's the roof rail as well. This is done in glossy black finish. The windows, the size is massive on this car. Now look at the rear quarter glass over here. You know, कई cars में इतना बड़ा तो main glass होता है almost. That is the kind of size that this car offers, and I think it is the size only that matters for this car. Now, if we talk about the rear design, then there's a lot to talk about. You get split tail lamps. These are also LED type and there's LED strip running over there and the design of the rear in general is very flat as you can see. So there's nothing that is you know coming out, which is why you say it is brick like design. But इसका benefit ये होता है that you get a lot of room at the rear. So अगर हम अंदर से देखेंगे this is a 5-seat car, not a 7-seat version. लेकिन इसमें 7-seat आता है but इंडिया में टोयोटा अभी 5-seat ही ऑफर करेगा. So this is how you get a lot of room by making the car, you know, the proportions very squarish. खैर हम rear के डिज़ाइन की बात कर रहे थे, so we'll talk about the rear bumper now. Bumper पे आप notice करेंगे there's a lot of chrome over here. You can see the sensors over here. There's the rear parking camera, and then there's the light, a big Land Cruiser badging, rear wipers, and there's the defogger as well. Now I'll open the boot and let's see what's inside.
That's a massive boot. It has also kept an accessory over here. So there is a power outlet over here. You can also see a boot light, a lamp in the boot. And then what's under the boot floor? Let's find out. So इसके boot floor के नीचे spare wheel का access यहाँ से नहीं है, spare wheel का access नीचे से होगा. So you can keep toolkit over here. Boot के दोनों sides पे ये hooks हैं. If you want to, pack some luggage over here, आप यहाँ पे net लगा सकते हैं. There's this parcel tray, basically parcel curtain जो यहाँ पे है. And क्योंकि इसमें 3-row version भी आता है, so you also get place to keep cups or everything. You can keep a phone over here जो 3-row version आता है. Unfortunately अभी इंडिया में नहीं आ रहा. So probably that is the kind of market demand that Toyota has seen. Otherwise rear passengers के लिए यहाँ पे aircon vents भी हैं. This is even in the version that is a 5-seat version of this car. So यहाँ पे एक speaker भी है. So everything is there for the third row. It's just that the third row is not an offer as such for the Indian market. अब इस boot को close करने के लिए यहाँ पे मेरे पास option है. Electrically close हो सकती है. Yeah. So that is how the boot of the car closes. Yeah, one more thing before we end the exterior. You would have noticed the ZX badging over here. So this is the only variant that is coming to India right now, and the price is going to be 2.10 crore rupees ex-showroom. So this was all about the exterior of the car. अब हम इसका interior देखेंगे. You tell us your thoughts in the comment section कि आपको इसका exterior कैसा लगा. All right, so let's check out the interior of the car. The right way of getting into any LC is by grabbing this door handle over here, which makes getting in easier. The car is very tall, So इसके interior की बात करें, so the first thing that immediately would come to your notice, comes to my notice, is the very familiar beige color जो आपको Land Cruiser में मिलता है. So this is the new dashboard. It is very simplistic in the way कि इसकी ऊपर की एक layer है which is running flat, and then there's a clear layer below, large center console. So in that case, the design of the dashboard is very simple. It is pleasing to the eye along with this large touchscreen infotainment system. I'll talk about the materials now. So यहाँ पे सारा soft touch layer है, and this part is also done in leather. This is also leather. It is soft. अगर मैं doors की बात करूँ तो doors पे भी इसका material जो है, this is soft. There is a wooden trim over here and a lot of soft touch materials all around. Of course, this is the armrest. It has to be soft touch in any way. You get AC vents over here on top. 4 are there. These are for the front passengers. This car gets 4-way auto AC. And we will talk about the storage now. So अगर इसके dashboard की बात करें, so it is done in 2 layers. So ऊपर वाले portion में you can keep bottles or something. नीचे owner's manual रख सकते हैं जैसे अभी रखी हुई है. And on the doors as well you get some storage. आप notice करेंगे नीचे एक bottle रखने की, छोटी bottle रखने की storage है. The leather seats over here, these have good cushion, both on the lower end as well as ऊपर. And there is storage in the center console. There are 2 cup holders. अगर मैं इसका armrest open करूँ तो इसके armrest में भी काफ़ी deep storage है. So I can put my entire hand in it. एक storage tray है अंदर, and this is a cool box, so you can actually keep things cool over here. आप यहाँ पे medicine या bottle वगैरह कुछ रख सकते हैं. And there's also a sunglass holder over here. This is felt line, थोड़ा rubbery है, so very sure sunglasses इधर उधर नहीं आपके हिलेंगे. So this was more about the kind of storage space that we have in the cabin. Now let's see what all features this Toyota have to offer. So यहाँ पे low ratio के लिए option है. There is the option to lock the differential as well. There's electric parking brake with auto hold, and the regular 10-speed automatic transmission जो इस कार में आता है. And there's something over here as well. So you get a USB-A as well as USB-C options with this car. And interestingly, there's also a CD or DVD player as well that I can see. The car is not switched on. I'll try to switch on and show you कि इसके infotainment system में exactly क्या आता है.
So अभी हमने car on नहीं किया. Toyota doesn't want us to switch the car on, but you do get front seats with ventilation as well as heating. ये दोनों के लिए possible है, और even I think steering wheel के लिए भी heating का option है. Now I know for a fact that these ORVMs are also heated for the driver or driver seat. Of course, it is electrically adjustable, but there are 3 memory options that you can have. I really like the way in which Toyota ने ये वाली space use की है to keep these controls right in front of the driver, and these are backlit as you can see. Unfortunately यहाँ पे blue backlighting है. I would have really liked अगर इस पूरे console में और यहाँ पे backlighting जो होती है white होती है. Blue somehow feels a little outdated to me, especially in a car that is going to cost more than 2 crore rupees. Anyway, we now have the infotainment system on right in front of me, and I'm thankful that Toyota ने वो वाला infotainment system छोड़ दिया जो इसकी यूजुअल कार्स में आता है. लेट्स सी कि इसका टच एंड फील कैसा है. सो सेटअप में चल के देखते हैं. सो देयर इज़ द ऑप्शन टू एडजस्ट क्लाइमेट ओवर हेयर, एंड देयर आर सम सेटिंग्स, देयर आर थीम्स. ओके, let's see if we can change the color. Okay, so color of the infotainment system can change, but that doesn't change the color of the controls that you have over here. These are drive modes. There are multi drive modes over here. You can select modes from here. इसका display अभी नहीं आ रहा है. Let me see if, okay, so we are not able to get that. There is the crawl mode as well with this car. So this car can crawl. It is meant to off-road. Okay, these are climate settings, music settings. This is trip information over here, and this gives you information about your drivetrain in the car. इसकी settings में क्या है? So there is slide of software information, nothing much over here. यहाँ पे trip information आ गई है. Basically उधर वाले controls इधर आ गए हैं. What else is there in setup? No, we don't want to add. ओके, सो मेरे को इसका टच फीडबैक अभी अच्छा लग रहा है, एंड फ़ोन कनेक्टिविटी अभी हमने की नहीं हुई है. सो बेसिकली मुद्दे की बात यह है दैट इसका टच फीडबैक अच्छा है. द स्क्रीन लुक्स गुड. नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेयरिंग व्हील. ऑफ कोर्स स्टेयरिंग व्हील में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शन है, and as is very common with Toyota, driving position is very familiar. Just right at the moment when you sit inside the car, you feel like you've been driving this car for quite a lot of time. और अगर आप notice करेंगे, look at the bulge on the bonnet that you can see over here. वो middle में एक recess है, और sides पे वो इतना bulge है, ऐसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है बोनेट ऊपर को उठा हुआ है. यू डोंट हैव टू सी डाउन टू सी द बोनेट. बोनेट यहाँ से ऊपर उठा हुआ है. सो आई डोंट थिंक के ऐसा यूजुअली कार्स में होता है. इवन इन एसयूवीज दैट यू गेट टू सी द बोनेट लाइक दिस. सो दिस इज माई आई लेवल फॉर द स्क्रीन, एंड द बोनेट इज ओवर हेयर. सो स्क्रीन से इतना ऊपर दिख रहा है. सो डेफिनेटली ड्राइवर इज गोइंग टू हैव द बेस्ट काइंड ऑफ व्यू दैट you can see in this car. इसके ORVMs भी डोर्स में इस तरह से माउंटेड है कि वो A पिलर से दूर है. So this giving me a good view from the side. Although इसका A पिलर भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, so that's an advantage in itself. इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं कुछ कंट्रोल्स की बात करूँ ड्राइवर के लिए, so there's the option to open the boot as well, और यहाँ पे ESC का भी ऑप्शन है. There are controls to open the bonnet as well. Anyway, we were talking about the steering wheel. तो steering wheel पे यहाँ पे cruise control का option है. यहाँ पे modes हैं. Mode should be for the infotainment system, and then there are the options to manage the connectivity over here. इसके instrument cluster में it's a digital type MID, full colored instrument cluster that you're seeing right in front of you. But analog dials हैं, so you get the speed dial over here, the rev counter over there. Very basic, but it is looking, it is pleasing to the eye. Doesn't look outdated, and that's a very important thing when it comes to Toyota. So now you can see all the lights switched on over here. अब इसके drive modes अगर select करके देखें तो let's see if we get the option. So yeah, we are getting the option over here. So there's the eco mode, there's comfort, there's normal, sports plus, and you can also customize it. I don't know how it's happening, but yeah,
there are options. If we get the car for a longer duration, then we might be able to play with it. So these were all the features, and there's one thing that I need to talk about again. यहाँ पे मुझे जो थोड़ी unusual लगी is कि ये armrest को अगर आप देखेंगे तो you will feel that this armrest will split open like it does in some of the luxury cars, लेकिन ये singly move होता है, so that was a little unusual fact for me. अब ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ द सनरूफ एंड द कंट्रोल्स दैट आर ओवर देयर. अनफॉर्चुनेटली ये भी ब्लू बैकलाइट है, एंड सनरूफ इज़ ऑल्सो नॉट पैनोरामिक टाइप इफ़ यू वुड नोटिस. सो ये छोटी वाली सनरूफ ही है. ऑफ कोर्स इट्स वाइड बिकॉज द कार इज़ सो वाइड, बट दिस इज़ जस्ट देयर फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स. अभी हम रियर में बैठेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी के रियर पैसेंजर्स के पास ये ऑप्शन नहीं है. एनीवे देयर आर रीडिंग लाइट्स ओवर हेयर एंड दीज आर LED टाइप. बहुत अच्छी यू नो लाइटिंग का कलर इज़ वेरी गुड. इट इज़ नॉट ब्राइट वाइट, येलोइश वाइट कलर है, तो अच्छा कलर है. तो ठीक है, अब इसके रियर में चल के देखते हैं हाउ इज़ द रियर सीट. सो इसके एज इज़ द केस विद गेटिंग इन द फ्रंट, इसके रियर में भी आप ग्रैब हैंडल पकड़ के ही एंटर करेंगे. सो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, स्पेशली फॉर all the important people who get to enter in this car. Okay, so there are manual controls on the seat over here. This is not electrically adjustable. Seat recline adjustable hai, but I can't find the control for sliding the seat. Anyway, the one thing that immediately comes to my notice is the large window that I have over here. यहाँ से बाहर का access बहुत अच्छा है. Unfortunately, there are no rear window curtains. I think all the VIP people might feel the need for them. For their privacy, but rear passengers do get 2 entertainment screens. एक यहाँ पे मेरे सामने है. There's also one on that side. Now this reminds me that although वो वाली सीट काफ़ी आगे positioned है, ये वाली सीट almost driver position पे है अभी, and there's a lot of leg room that I have, and you know, I'm not crouching in any way, so it feels very comfortable. There's a lot of knee space, a lot of leg space on offer. Front seat के नीचे पैर slide करने की भी जगह है. So as far as roominess is concerned or the space in the cabin is concerned, I'm feeling that it is very good. There's a lot of headroom as well for me. यहाँ पे मेरे पास aircon vents भी हैं. There are aircon vents over there as well, center console के पीछे. If you're able to notice, यहाँ पे aircon vents हैं. So I'm very sure कि ये वाले aircon vents क्योंकि हम बंद कर सकते हैं. So you know, I would like to keep this closed because ये यहाँ पे direct मेरे face पे आएंगे. Although there is an option to have the airflow adjusted to this place as well. There are no trays over here, but यहाँ पे seat के पीछे there is storage space. There is storage space in the doors as well. Door पे speakers भी हैं यहाँ पे with JBL branding. So this car gets JBL audio system. There's the armrest on the door. This is done in leather finish, and there are a lot of controls over here. यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसमें यहाँ पे डुअल जोन ऑटो AC है. सो देयर आर कंट्रोल्स फॉर बोथ द पैसेंजर्स. यहाँ पे इनफैक्ट इसकी जो रियर सीट्स भी हैं वो भी वेंटिलेटेड और हीटेड हैं. दीज आर बोथ द साइड सीट्स. और इसके नीचे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं. देयर आर द USB-C पोर्ट्स एंड द 12 वोल्ट सॉकेट. देयर इज़ ऑप्शन फॉर HDMI एज वेल. और ये जो वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन के लिए हैं, जो आप यहाँ पे मेरे सामने देख सकते हैं. सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द रियर डोर दैट यू आर सीइंग राइट हियर. और यहाँ पे जो रियर सीट्स हैं ये भी इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ कैप्टन सीट्स हैं, इफ़ यू वुड नोटिस. सो दीज आर 40-20-40 स्प्लिट सीट्स. एंड या सो रियर सीट्स की बात करें अगर तो in terms of cushion I'm feeling that it's good. No, it's 40-20-40 is I think just the back end, not the bench. Bench इसका 60-40 split है, as you can see. I'll try to yeah, even so the bench is 60-40 split, but this is 40-20 split. I'm not able to open this, but anyway, this is 40-20-40 split. Very large, very comfortable seats over here. So रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन है. द सेम काइंड ऑफ लाइटिंग दैट यू सीन. देयर इज द AC वेंट्स, देयर आर पावर विंडोज ऑफ कोर्स, एंड लॉट ऑफ कंट्रोल्स ओवर हियर दैट यू कैन सी. सो ओवरऑल अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ, सो बिकॉज इट इज़ बेज इन कलर एंड इट इज़ एनी वे रूमी, सो द सेंस ऑफ स्पेशियसनेस इट इज़ देयर ऑन द इनसाइड. It looks upmarket. The kind of materials that Toyota has used, the kind of quality of these materials makes me feel that I'm sitting in a cabin that is expensive. As expensive as 2 crores or over 2 crore rupees? Maybe not, because there are certain things that could have been improved. For example, the
color of the lighting. I would have also liked some more features. There's no panoramic sunroof over here. Some feel-good features basically that just make you go wow. वो शायद आपको इसमें missing लगे. But otherwise, as far as roominess, practicality, all these things are concerned, it's a cabin that you would like to be seated in. So that is what is there. So इस कार के अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखने हैं नेक्स्ट सेक्शन में. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. So LC300 में 3.3 लीटर डीजल इंजन आता है that makes over 300 PS of maximum power and 700 Newton meter of peak torque. Compared to the engine of the Fortuner, it is way more powerful and torquey, and this engine is paired with a 10-speed automatic transmission. So, चलिए अब next section में देखते हैं इसके dimensions. So LC300 is a large D-segment SUV और इसकी overall length almost 5 meter है और width और height almost 2 meter है. इसका wheelbase 2850 mm है, which is longer than that of the Fortuner. So it's a large car. ये इसका एक advantage है, इसका एक highlight है. The engine is very powerful. That is another highlight. This car is made for off-roading purpose and it costs 2.10 crore rupees. What are your thoughts about the new LC300? You tell us in the comments section and do not forget to subscribe to V3 Cars where we are giving you the best and the most extensive coverage of the Auto Expo 2023. Thanks for watching this video. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.